This is a very important case on lease and the rule against perpetuity, and the facts are very interesting. So, facts here are कि lesser and lessee, the lesser entered into a deed of lease with the lessee, but जो conditions यहाँ पर हैं they are more in the favor of lessee. जनरली लीजेस में क्या होता है, जो कंडीशंस होती हैं आइदर दे आर न्यूट्रल लाइक फेवरिंग बोथ दी पार्टीज और समवॉट टिल्टेड इन फेवर ऑफ द लेसर, बट इन दिस केस द कंडीशंस इन द लीज आर टिल्टेड टुवर्ड्स द लेसी. सो कंडीशंस इन द लीज आर कि हर 10 साल में लीज का रिन्यूअल होगा और लीज रिन्यू होनी है या नहीं it will be decided by the lessee. Generally in leases the option to renew the lease is given to the lessor because lessor is the owner of the property. Generally the lessor is the owner of the property. So in generally in leases the lessor who is the owner of property has the right, like whether after 10 years he wants to renew the lease or not. But in this case the lessee is given the option that at every 10 years he will be given an option to renew, and as long as he desires in a form of 10 plus 10 plus 10 he can get the lease renewed. However he may also deny. It was totally on the lessee that whether he will deny or accept. Lesser was having nothing in his hands in terms of renewal of the lease. तो बेसिकली यहाँ पर लेसी के पास ये ऑप्शन था कि वो हर 10 साल में लीज को अपनी मर्जी से रिन्यू कर सकता था, और लेसर के पास जो कि प्रॉपर्टी का ओनर जनरली होता है उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो प्रॉपर्टी के रिन्यूअल से रिफ्यूज़ कर दे. सो यहाँ पर जो लेसर है he moves to the court saying that this condition relating to renewal of lease was hit by the rules against perpetuity. तो यहाँ पे जो लेसर है वो कोर्ट जाता है और ये कंटेंशन उसका होता है कि ये जो रिन्यूअल का क्लॉज है ये सेक्शन 14 और रूल अगेंस्ट परपेचुटी के अगेंस्ट है, उसको वायलेट करता है. तो इशू यहाँ पर ये है कि वेदर क्लॉज फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज can be regarded as creating interest that might fall within ambit of rule against perpetuity, or whether option given to lessee to get the lease which is initially for 10 years renewed after 10 years is hit by the rule of section 14. So the court here observed first of all कि in leases and in transfer of property there is a difference. Section 14 is applicable only when there is transfer of property, but if there is any stipulation relating to renewal, here in this case 10 for a period of 10 years, it could not be regarded as transferring property or any right therein. और यहाँ पे जो क्लॉज है कि लीज कैन बी रिन्यूड एट ऑप्शन ऑफ लेसी इज अ पर्सनल कोवेनेंट पर्सनल कंडीशन. सो यहाँ पे जो ये क्लॉज है कि लीज का रिन्यूअल आफ्टर 10 ईयर्स होगा और एट दी ऑप्शन एंड दी विल ऑफ लेसी, ये पर्सनल कंडीशन है, पर्सनल कोवेनेंट है. सो इट इज़ नॉट हिट बाय द रूल ऑफ परपेचुटी विच इज इन सेक्शन 14 बिकॉज इट इज़ नॉट हिट बाय सेक्शन 14 बिकॉज इट मे हैपन कि लेसी मना कर दे, लेसी मे डिनाई कि नो आई डोंट वांट टू रिन्यू द लीज. So, in light of this fact, the lesser may deny, it is not hit by the rule against perpetuity. Moreover, as per section 105, a lease in perpetuity can be made, but even then interest remains in the lesser, which is an important thing. As per section 105, a lease in perpetuity can be created. सो 105 में एक लीज जो परपीचुटी में हो फॉर अ इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम हो वो क्रिएट करी जा सकती है, बट
जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो लेसर का ही रहेगा। और सेक्शन 105 क्लियरली डिफाइन करता है लीज को कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम express or implied or in perpetuity, that is important. So in section 105 lease in perpetuity can be made out. So lease is not just a contract but it is a transfer of an interest in land and creates a right. So in light of section 105 lease in perpetuity can be created and section 14 will not be applicable here because this right of renewal at the option of lessee was only a personal covenant. And if you see the language of section 14 and section 15, it will be clearly visible to you कि section 14 could not be regarded as transferring in context of lease the exact property, but it only gives certain rights to enjoy the person of that property in leases. So in light of section 14 and section 105 and regarding the option of renewal which was a personal covenant, the court said this condition, the clause in this lease is valid and it was not hit by section 14 and it was not against the rule of law which is in section 14.